Hi, friends. Today I'm going to talk about a little bit deeper into understanding costing for exports. Normally, let's for simple for understanding purpose, let us say that the costing is divided into fixed cost and a little bit of variable cost, right? So it's be it say transport from your factory to the port, or be it say when you're shipping to different country, might be there is something different, fumigation is different for different countries. So there are some things which will change based on the country that you're exporting to, and there's some things that will change based on where you're buying from India, the local transport and things like this, right? So let's look at in costing, how do we understand this, what do we have to keep in mind? So why the reason that we are talking about this costing today, my friends, is because the one of the biggest problem that exporters face is that if the costing is not right, then you are making a loss on your shipment, right? So it is the same in the domestic market also, but in domestic market we have better control, right? If you are say sourcing from Karnataka and selling to a buyer in Mumbai, for example, you pretty much know everything. So in exports, but there is this challenge that let's try and address few points now as to how we can avoid and what we can understand, right? Again, as always, let us take an example of rice to here, and say let's take an example of Karnataka is the sourcing point, right? Now, if you are into active exporting of rice, or you are already started exports and you have a lot of inquiries from buyers to whom you are giving prices on a continuous basis, तो क्या होता है ये टाइम में, फॉर एग्जांपल, where you will face the bigger challenges, the first thing is the price of the product. But then आज के दिन में, since there is a little bit of help, like for example of platform from PWIP where you can get prices instantly on your WhatsApp, तो वो हम थोड़ा टाइम के लिए साइड में रखते हैं, राइट? सो लेट अस कैलकुलेट द कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. वो तो ऊपर नीचे होता ही है, राइट? यू वी ऑल नो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, देर इज ऑलवेज अ प्राइस चेंज विच वी हैव टू कंफर्म फ्रॉम द मिलर और द मैन्युफैक्चरर, राइट? सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को अभी हम साइड में रखें. लेट अस टॉक अबाउट ऑल अदर कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. नाउ, ट्रांसपोर्ट, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, इट इज वेरी वेरी ट्रिकी. You might have made a costing. Let's say, assume there is a place called Raichur in Karnataka, there is a place called Tumkur in Karnataka, there is a place say Sirigupa or Bellary, right, in Karnataka. Sometimes the costing of transport is either 1.6 rupees a kg or 1600 per ton. Sometimes it is 1800 per ton. Sometimes it is also 1400 per ton. तो ये जो क्या है, it keeps on varying a lot, जो आपका डायरेक्ट आपका इफेक्ट आपका कॉस्टिंग पे पड़ सकता है, राइट? अगर आपने कॉस्टिंग किया है 1800 पर टन ट्रांसपोर्ट के ऊपर, बट एक्चुअली आपका जब माल निकलता है फैक्ट्री से, एट दैट टाइम द कॉस्टिंग इज ओनली 1400, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आपने कॉस्टिंग 1800 में बनाया था, लेकिन कॉस्ट आपका एक्चुअल कॉस्ट निकला 1400, तो आपको 40 पैसे या 400 रुपीज पर टन का प्रॉफिट ही हो गया, राइट? It that is still okay. But what if you had made costing at 1400, but in actually when you are shipping 1800 हो गया costing, right? So there is a big difference depending on if you're doing 5 containers, 10 containers or even 1 or 2 containers, क्योंकि वो एक जगह पे आपका कॉस्टिंग मिस हो चुका है. अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फिर से आपका कॉस्टिंग मिस हो सकता है. मीनिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल इज दैट बिकॉज द वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मेनी, हर वेरिएबल में अगर आपका प्राइसिंग मिस हो गया तो इट बिकम्स अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लॉसेस. ये एक्सपोर्ट के लिए ये जितना इजी है एक्सपोर्ट समझना, उतना ही डिफिकल्ट है आपको प्राइसिंग बनाए रखना
so that you make profits, right? तो लेकिन ट्रांसपोर्ट से पहले जो फर्स्ट थिंग उसके पहले जो होता है वो है पैकिंग कॉस्ट, राइट? पैकिंग कॉस्ट में इफ इट इज राइस वी आर आइदर डूइंग इन अ पीपी बैग और अ नॉन वोवन बैग और अ बीओपीपी बैग और अ पीई पाउच में पैकिंग होता है, जैसे आपका ऑर्डर हो, बेस्ड ऑन दैट, इन दैट एटलीस्ट वी कैन से कि हमको थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता है, मतलब वो इवन एज ऑन टुडे थोड़ा बहुत मार्केट प्राइसेस आर वेरी गोइंग हाई फॉर पैकेजिंग पीपी मटेरियल के लिए, बट अदरवाइज नॉर्मली वो ज़्यादातर स्टेबल रहता है एंड यू कैन काइंड ऑफ टेक अ रिस्क ऑन दैट। नॉर्मली एज मैंने पहले भी बोला है, पैकेजिंग के लिए 25 kg पीपी बैग के लिए रफली 50 पैसे पर केजी एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, या 500 रुपीज़ पर टन एडिशनल ऐड किया जाता है, राइट? सो दैट इज पैकिंग। सो ट्रांसपोर्ट एक पॉइंट है माई फ्रेंड्स टू focus on, so that you don't miss the pricing. So you take regular updates from the seller in that area कि truck ट्रांसपोर्ट क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम से रायचूर इन कर्नाटका टू चेन्नई इन तमिलनाडु एज ऑन टुडे इज रफली अबाउट 160 पर क्विंटल और 1600 पर टन, राइट? ये चेंज हो सकता है। नाउ when you reach when your cargo has reached Chennai, there are also a few things which are going out of control. As on today's day, if you see, what has happened is as on today because of the COVID situation, वैसे ही कंटेनर शॉर्टेज चल रहा है, एंड देन all specific routes जो होते हैं shipping का, the ocean freights are high, so generally prices are on a high, but even then उसमें भी some variables are like, for example, fumigation cost। मैं एक example लूँगा मैं। In fumigation cost what happens is normally roughly a fumigation of one container can be somewhere around something like say 800 rupees per container or 1000 rupees per container, assume that you are shipping to Singapore, राइट? तो कभी कभी 600-700 में भी हो जाता है, बट दैट इज pretty much स्टैंडर्ड अगर आप सिंगापुर के लिए शिपमेंट कर रहे हो, राइट? बट assume that you are now given pricing to a Vietnam buyer thinking that the fumigation is going to be the same, or to a Malaysian buyer thinking that the pricing is going to be the same that you give to Singapore. In that case again things might go wrong. Why? Because for Vietnam it is not the same. Your cost will not be 800 rupees or 1000 rupees. Your cost can be 3000 rupees per container, or up to 4000 or 5000 rupees per container, right? Why it is high for Vietnam? Because Vietnam has a clear rule कि empty containers first have to be fumigated, and then container में stuffing होने के बाद, bags जो stuffing होने के बाद again it has to be fumigated, एंड उस फ्यूमिगेशन का जो नॉर्मली दोस्तों दो तरह के मेजर फ्यूमिगेशन होते हैं, आइदर इट इज़ टैबलेट्स और इट इज़ गैस। टैबलेट्स जो उसको अंदर फेंका जाता है एंड द डोर इज क्लोज्ड, and then after 24 hours this tablets gets activated. गैस में क्या होता है, it is instant। कंटेनर को बंद करते हैं, there is a can of methyl bromide जो कैन आता है, वो कैन को पाइप में फिक्स करते हैं, and the pipe is put into inside the container through the container door, और पंप करते हैं ये गैस को, मिथाइल ब्रोमाइड गैस को, वो गैस कंटेनर के अंदर फैल जाता है एंड इट अवॉइड्स एनी पेस्ट और समथिंग। सो वियतनाम के लिए योर फ्यूमिगेशन कॉस्ट कैन बी फ्रॉम 3000 rupees to about 5000 rupees also। द PQ ऑफिसर आएगा उधर देखने के लिए, वो सजेस्ट करेगा कि क्या करना है, क्योंकि वो वियतनाम गवर्नमेंट का वो एक रूल है। सो दिस इज वन थिंग दैट फ्यूमिगेशन इज वन थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। Again, ocean freight is the main thing, right? If you are sending your cargo to Singapore versus if you are sending your cargo to Vietnam, obviously transport rate या जो ocean freight होते हैं वो that is definitely going to be different. But
Normally shipping lines will give you ocean freights on per monthly basis, meaning अगर उन्होंने फरवरी का प्राइजेस दे दिया तो फरवरी के लिए सेम प्राइस रहेगा. बट आज के दिन में बहुत ओशन फ्रेट का जो फाइट है वो चल रहा है, एंड देन इट हैज बिकम really unpredictable. You might be at the end of February taking order for March, thinking that the ocean freight might be same, but it might not be the case. So these kind of things are there. So the point here is दोस्तों कि for us is to understand ऐसे कौन से चीज है, ऐसा कौन सा कॉस्ट है which has a very high risk of varying. And सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक जो बात है हम सबको पता ही है दोस्तों, इट इज़ द यूएस डॉलर. तो डॉलर क्या है, फ्लक्चुएट होते ही रहेंगे. आपको पता ही होगा आज के दिन पे इफ़ यू सी, कल और आज से जो डॉलर एकदम फ्लक्चुएट हुआ है, राइट. अब जब आपने कॉस्टिंग किया, आप एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब आपने कॉस्टिंग किया तभी the dollar was at say 72.50 for example, right. लेकिन जब आपका पेमेंट आया कस्टमर से, द डॉलर इज एट 73.50. सो आपका पेमेंट आना है $10,000 एक इनवॉइस का. फॉर एग्जांपल 72.50 पहले था, अभी हो गया 73.50. मतलब you will get ₹1 per dollar more. So if it is $10,000, one you are getting ₹1 more per dollar, right. क्योंकि एक रुपए से डॉलर ऊपर गया है, विच मीन्स इन द सेंस कि हम एक्सपोर्टर्स के लिए क्या हुआ है कि द रुपी एक्चुअली हैज गॉट डिप्रिशिएटेड, डॉलर हैज बिकम स्ट्रोंगर, तो एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है, राइट. तो आपको ₹10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा बिकॉज द डॉलर हैज़ बिकम 73.50 when but you made costing at 72.50. बट वैसे ही इफ इट बिकम्स वैसा वर्सा क्या होगा, आपने कॉस्टिंग किया था $डॉलर 73.50 में था, but when your actual payment came the dollar was at 72.50, so that means you're going to get 10,000 rupees less in payment, right. अगर आपका 10 कंटेनर हो शिपमेंट में, यू विल गेट 1 लाख रुपीज लेस, राइट. सो इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्क. इसके लिए भी सोल्यूशन है. आई होप you friends might be knowing that you can actually hedge the dollar with your bank. तो बैंक ऐसे ही hedge नहीं करेगा, वो बैंक will tell you to keep a fixed deposit of some small amount. तो फिर आप डॉलर फ्रीज कर सकते हो. ऐसे सबके लिए सोल्यूशन है दोस्तों. आई एम जस्ट today wanting to highlight a few points where your costing might go wrong and then it can lead into losses. If you're a big exporter where you're doing 50 to 100 or more than that 100 containers a month, तो आप सोचो एक छोटा सा कॉस्टिंग के वजह से 100 कंटेनर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स एक्चुअली बर्न देयर मनी, बर्न देयर फिंगर्स एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, राइट. बाकी सारे रिस्क्स है वो अलग है. फॉर एग्जाम्पल ट्रक जा रहा था टू द पोर्ट, ट्रक एक्सीडेंट हो गया और जो वो गांव के सब लोग ने चोरी कर दिया आपका माल. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर दोस्तों. द शिप वॉज गोइंग इन द वाटर, द शिप कुछ हो गया और एंड शिप तो डूब गया पानी में. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. उसके लिए इंश्योरेंस वो सब चाहिए होता है. बट आई एम टॉकिंग टुडे अबाउट कॉस्टिंग दोस्तों. इफ वी डोंट हैव द राइट कॉस्टिंग तो आपका प्राइसिंग कहाँ पे रॉन्ग हो सकता है. लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स दैट ऑन पेपर व्हेन वी कैलकुलेट वी सी दैट हाँ हम प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो ट्रेड में जब पैसा आता है यू वी सी दैट एक्चुअली वी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट. हर शिपमेंट में हम लॉस कर रहे हैं. एंड देन दैट इज वाई इट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज टू कौन सा कॉस्टिंग होता है एक प्रोडक्ट भेजने के टाइम पे, और हम हर कॉस्टिंग को समझ के उसमें कुछ डिविएशन है, हो गया है, नहीं हो गया है, उसमें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो आपका हो, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है, कॉस्ट ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट टू द CFS है. वो CFS में आपका कार्गो अनलोड होगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, फ्यूमिगेशन होगा, वापस स्टफिंग होगा, वो जो लोडिंग अनलोडिंग होगा, वहाँ पे आपका बैग्स कुछ चोरी हो सकता है, राइट. फिर उसके बाद आपको शिप में डालेंगे, आपको BL आएगा. ये सब प्रोसेस में आप
आप सोचते हो कि इतना कॉस्टिंग है, तो आप वो कॉस्टिंग के हिसाब से आपने प्राइसिंग अपने किया रहेगा. सो द बेस्ट इज ऑलवेज, इवन दो आपने पूरा एफर्ट डाला है टू गेट द कॉस्टिंग राइट, एट द एंड यू हैव टू हैव अ ओवरहेड या बफर बोल के एक कॉस्ट होना चाहिए. मेरे ख्याल से फॉर एग्जांपल से चावल में आपको एक 20 पैसा पर केजी या 200 रुपये पर टन एक्स्ट्रा मार्कअप करना अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप उसको कवर अप कर सकते हो. दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू माई फ्रेंड्स. आई होप दिस वॉज यूजफुल माई फ्रेंड्स. माई रिक्वेस्ट, दोस्तों मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप जितना चाहो उतना कमेंट्स छोड़ दीजिए, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड. ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, इट इज़ करेंटली मोस्टली फोकस्ड ऑन राइस माय फ्रेंड्स, लेकिन आप सब शायद अलग अलग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप कुछ और फील्ड में हो सकते हो. सो आपको क्या राइस का वीडियोस या राइस का कंटेंट चाहिए, या एक्सपोर्ट का कंटेंट चाहिए. सो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो माय फ्रेंड्स. आई होप आई वाज एबल टू ऐड some value today. Please leave us some comments, and we'll definitely try to get some knowledge on that, my friends. Thank you so much.